Beckham and Anthony Maras's Hotel Mumbai. A BAFTA nominated actor, he's a recipient of the I. Could I request Miss Tanya Sahni to please come forward and welcome Anupam ji. One of the things that I've learned from Anupam ji is how he proudly celebrates the association of a family. Tanya ji is Parikshit ji's daughter and has travelled all the way from Singapore for this event and to celebrate the launch with her beloved father. Our second guest for the session is empirically synonymous with grace. I'm equally happy and proud to introduce Ms. Deepti Naval. Deepti ji is an artist in the true sense of the word. She is a celebrity. Could I now request Mrs. Poonam Jam to kindly come forward and welcome Deepti ji. One of the things that I love reading in Deepti ji's recent book is her incorrigible respect for her elders. Coming from a traditional family, it is only righteous on my part to gather the blessings of an elder of my family. Before we begin, thank you Poonam Bua for all your love, unconditional support and of course the delicious food. And now, Mr. Parikshit Balraj Sahani. Parikshit ji never wanted to be an actor, imagine. In the book Strange Encounters, Parikshit ji will tell you exactly why the never was so चाहता हूँ कि आप इस पे आएं, ज़रूर आएं. तो Parikshit ji, we don't meet very often, whether it's Deepti, but I always believe that there are certain relationships which are like a pause button on a tape recorder. Where you leave, you start dubbing, it starts from there where you had left. So you have been a great optimist. That is the greatest quality that I see in you. We have met in the past, and every time you met me with so much of enthusiasm, so much of joy and so much of happiness. And it's not only with me. No, I have seen you with everybody meeting, all those people, Malvika and everybody who come here, I think have come for their love for you. Because frankly speaking, I have yet to read the book, but I will be reading it. But you, and on top of it, you're from Shimla. And Balraji had a very beautiful bungalow on Baluganj. And we used to cross that place and we used to say that Balraj Sahni Sahab yahan rehte hain at that time. And we had, it was like a sense of wonder because we've grown up watching his films. And I like the title of your book, Strange Encounters, because I think all of us have had some strange encounters. Thank you for introducing us with so much of love and so much of authenticity. You're right, these days books are, you don't really see that atmosphere of a bookshop. From a small town, I can tell you that bookshops were the most amazing dream place for us. We had a bookshop called Batish and Company. वो पुरानी किताबें रखते थे. I was introduced to my first book by my छोटे चाचा. उन दिनों वो रशियन लिटरेचर ट्रांसलेट होता था सोवियत यूनियन का. तो मदर करके जो मैक्सिम गोर्की का नावल था माँ, वो मेरी पहली किताब थी. And then one got so intoxicated by that magic of books that it really remained with me. At a time I had more than, I think, 14,000 books.
And then unfortunately, the 2005, the floods came in Mumbai and all my books got submerged in my office. But thank you for inviting us. Thank you for this wonderful afternoon. We don't have these kind of afternoons where people are just sitting here and chatting, and it's an afternoon about books, authors, memories, strange encounters. वरना शाम को जो पार्टी होती है या शाम को जो इवनिंग होती है उसमें पता नहीं क्यों लोग जल्दी में होते हैं, सुन कम रहे होते हैं, बोल ज़्यादा रहे होते हैं और वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, दूसरे से बात नहीं करते. They're talking at people rather than talking to people. So let me start with my strange encounter and then we'll ask Deepti and you. When I came to Mumbai on the 3rd of June 1981, Parikshit ji, I had come with a gold medal from drama school. But I was bald and thin. This is a very dignified, sexy, bald look. But when you are balding at some stage, half the hair have gone from here, half the hair from here. So that's not a very great look. And in Mumbai at that time, to be an actor without hair was impossible task. I did not know that. यहाँ कहते थे आपका हेयर स्टाइल है कि नहीं है, बाल हैं कि नहीं, तो आप एक्टर बन सकते हो. बिना बाल के आप एक्टर कैसे बन सकते हो? अरे मैंने कहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है. नहीं 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 नहीं, बाल नहीं है, आप असिस्टेंट बन जाइए, राइटर बन जाइए. तो जितने थोड़े बहुत मैंने पैसे इकट्ठे किए थे वो तो 3 महीने में ख़त्म हो गए. एंड आई यूज्ड टू लिव इन बैंड्रा ईस्ट. माई लैंड लेडी वॉज ए धोबन. हाँ, तो हम 4 स्टूडेंट्स एक कमरे में. मिस्टर सेठी इज हियर एंड हिज लवली वाइफ. सो सच अमेजिंग मेमोरीज ऑफ एवरीबडी. तो धोबन जो थी वो किचन में सोती थी अपने 4 बच्चों के साथ, और मैं 4 स्टूडेंट्स मतलब जो थे, हम 4 स्ट्रगलिंग एक्टर्स, वो दूसरे कमरे में सोते थे. तो पहले दिन मैंने उससे पूछा, उसके बड़े बेटे से, कि भाई मेरा एड्रेस क्या है. तो उसने कहा कि मैं लिख के देता हूँ. मैंने कहा मेरे फादर को बोलना पड़ेगा कि इस एड्रेस पे चिट्ठी लिखो. तो जब उसने एड्रेस ला के दिखा, मैं ज़ोर से हंसा. और वो एड्रेस मेरा क्या था? पहला, अनुपम खेर, 2/15, खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट. तो मैंने कहा मुझे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. बट मुंबई इज अ सिटी विच गिव्स चांस टू एवरीबडी, बट also it's a city, if you're not somebody, people are not really looking at you. Means you are, it has a place for everybody. तो दिन नहीं कटता था, दिन कटता ही नहीं था. सुबह हो जाती थी, आप रोज, आप आजकल की तरह थोड़ा है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जा सकते हैं. देयर इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ फाइंडिंग वर्क. उन दिनों दरवाजे खटखटाने होते थे. देवानंद साहब के पास गया था मैं, तो उन्होंने पहले पढ़ाए, अनुपम 2/15, खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड है तुम्हारा एड्रेस. But he was very enthusiastic and he was very, very loving. राही मासूम साहब, रजा वगैरह. फिर वो भी ख़त्म हो गया. तो मैं क्या करता था, जस्ट टू किल टाइम, मैं बैंड्रा ईस्ट से लोकल ट्रेन लेता था और मैं ऑल द वे चर्नी रोड तक जाता था और फिर वापस आता था. तो मैं दिन में 3-4 बार करता था ऐसा, तो टाइम कट जाता था. और ऑल्सो मैं लोगों को देखता था. तो मुझे लगता था कि लोगों को देख के एक आगे जाके मेरे को हेल्प होगी एक्टिंग में. तो एक पर्टिकुलर सीट होती थी जो खिड़की के पास होती थी. और I'm sitting on a grave. But do you know whose grave it is? Marina Nikolaevna asked me. No, I answered. Why don't you look at the name on the gravestone? Marina said. Look at it carefully. I did so. It was the grave of Tchaikovsky. And it was surrounded. It was surrounded by the graves of some of the other great composers of Russia, Mussorgsky and Glinka. I was stunned. Surely you came here on purpose, Marina said. No, I did not. Then it is very strange, she said, looking at me. You Indians are strange people. Yes, it was strange, inexplicable. This whole occurrence bordered on the supernatural. What had led me to the grave of Tchaikovsky, whose music was ringing in my head with such maddening intensity all night?
And why did Marina Nikolayevna have to come just then? One of the strangest things that has happened. The same thing repeated itself when I went to a place called Yasnaya Polyana. The other obsession with me has been and still is Lev Nikolaevich Tolstoy. I keep rereading and rereading his books. And right now my daughter Tanya, who's from Singapore, she's come for this event. She's reading Anna Karenina. And so Tolstoy, whenever I thought about him, it rang a bell in my head, you know. So Dad had come with Gyani Zail Singh Saab on a delegation. He was not the president then, to have a look at the, Moscow and so we took him to this Yasnaya Polyana to have a look at where Tolstoy lived. And the bell started ringing in my head again. I said, "Yeah, excuse me, I'll just go out." There was an interpreter with them. I went out and I again saw a mound and I sat down on it, and that chap, that Russian, came running out and said, "What the hell? Why are you sitting here?" I said, "Because, damn it, it's covered with snow. I was very tired. And the view is very good." He said, "You're sitting on Tolstoy." It was Tolstoy's grave because that was his last wish, that there should be no gravestone on it. आप इस कुर्सी पे किसकी कुर्सी पे बैठे ये बता दीजिए. These are the strangest things that happened. It's amazing. You know, in this book, let me say, because I just want you all to get an idea of what Pariksha ji has, the various things he's talked about. There is one very interesting thing, Pariksha ji, I thought, was when you are doing a role, and it's this your experience with the hangman. उसके बारे में थोड़ा बताइए ना. The real hangman who's there on the shoot, and he's. I was hoping nobody would remind me of that, because P.R. Chopra Saab was making a film called Agni Pariksha. Agni Pariksha. And the last scene, that was the original was done by Uttam Kumar in the same role, in Bengal. And he decided, the last scene was in the gallows. And the director decided, I thought, ठीक है चलेगा यार, मैं बहुत डन किए, ये लगा देते हैं सेट के ऊपर, लगा देते हैं gallows, और वहाँ पे chest out and stomach in and all that, and the hero always goes. But the directors decided to shoot in the real gallows in Pune, Yarwada prison. And I said, ठीक है, real gallows चलेगा. But my God, they put me in the same room, in the same cell with guys who were actually convicted and ready to be hanged. That's the first shock. Then they took me to the real gallows. And I asked the hangman, I said, I thought he was a junior artist or something. He said, "No sir, I am the real guy, 24 आदमियों को तो मारा है." अरे यार, and he looked like Yama, the death, because his face was all black. And he was tall, and I said, "यार एक रस्सी आपने लगाई इधर, बड़ी बदबू आ रही है." सर वो बहुत उनको पसीना आता है जब हैंग करते हैं सर, परसों ही किया अभी एक. So that was an experience that I was that is the worst experience I've ever had, because and then they put the real rope around my neck, and that one of the light boys had went to arrange the lights, and the policemen, the cops who were standing there, the officers, they yelled at him कि वो डर नहीं, वो उसको हैंडल ऐसे किया तो मर जाएगा, ये नीचे गिरेगा मर जाएगा. So that was my experience, and I said, thank God, this is next time. मैंने कहा सर next time वो set पे लगा दो आप, यहाँ मत ले. That was the story of the hangman. आपकी कहानियाँ सुन के मुझे बचपन की एक दो कहानियाँ याद आ गई. I have to share. Please. हमारे शिमला में एक बड़ा फेमस स्टोरी थी. भूतों की पहाड़ों में ना भूतों की बहुत कहानियाँ होती हैं. तो एक वन ऑफ द फेमस स्टोरीज ये थी, आपकी बातें सुन के मुझे याद आई कि एक आदमी रात का शो देखकर, शायद आपकी पिक्चर देख के निकला होगा, तो वो अपने घर जा रहा था. अब मे बी तो वो स्नोडन हॉस्पिटल है वहाँ पर शिमला में,
तो उसके बाहर एक आदमी मूंगफली, यहाँ सिंगदाना बोलते हैं, मूंगफली बेच रहा था। तो उसने उससे कहा कि ये 4 आने की मूंगफली देना। तो उस आदमी ने मूंगफली दी। जब उसने पैसे दिए उसको, तो उस आदमी के हाथ जो थे वो घोड़े के खुर की तरह थे। तो वो भागा वहां से, और वो भागा, और एक आदमी कहता मर गया क्या, कौन आदमी था बेच रहा। तो उसने एक साइकिल वाले को बोला साइकिल रोको, पीछे बैठा। उसने साइकिल वाले ने कहा तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कहता कुछ नहीं यार, मैं अभी वहाँ पर गया, उसने मूंगफली बेच रहा था, जब मैंने उसको पैसे दिए तो उसके हाथ नहीं थे, हाथ की जगह घोड़े के खुर थे। तो मुड़ के कहता ऐसे। तो आप डरावनी बातें कर रहे हैं इस पीछे किताब में, बट इज देयर a story in this which does not have a dramatic end? Yes, actually, I have read the book. How many stories are there? There is about 7 books about Russia. हाँ, गोद में रख लो। He's written a There lot are about 5 Russia. stories about Russia, and there are 2 about Pakistan, and the rest, I think, 7 or 8 are about India. And frankly, I should have brought my laptop. I haven't read the book. It's all on my laptop. He was a man who never raised his voice. I've never seen him raise his voice. Once he lost his temper because he used to ride an AJS motorcycle. And some Sardarji on another motorcycle, Dalton's, banged into him from behind. So he almost fell down, both of us. And that's the only time I saw him angry. And that is when only his lip moved. Because he didn't know what to tell this fellow, kya kar rahe ho? He was a man without anger in his, absolutely, I mean, the only thing, whenever he got angry, his lip moved. He didn't know what to say. He was an incredible man. You're very funny. He was an incredible father and an incredible man, absolutely You know, आज incredible. इतने सारे मुझे मेरे स्ट्रेंज एनकाउंटर्स याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आपने यहाँ बिठा दिया आज। मैं अकबर इज हियर, माय वेरी डियर फ्रेंड। आई मस्ट शेयर दिस विद यू, आई डोंट नो इफ यू वर इन दैट फिल्म और नॉट। तो मैं बहुत काम ढूंढ रहा था, और एक हमारे दोस्त थे जिनके साथ अकबर ने फिर, तनवीर अहमद ने एक साहब ने एक फिल्म बनाई थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट फिल्म। आई थिंक यू वर नो चिरुथा तो आपके साथ बनाई थी, उसके बीच चिरुथा और इनकी फिल्म से बीच में एक फिल्म थी, हाँ करेक्ट। तो मैं उनको मिला, तो पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे लोगों के पास हम जाते थे कि यार शायद इनको हमारी इज्जत हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक हाँ ठीक है, अभी तक मुझे कुछ काम नहीं मिला था। कहते यार तुम वैसे तो पतले पतले हो, मगर मेरी फिल्म में जो विलन है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, तो तुम करो। मैंने कहा मतलब करो मतलब? कहते हाँ तुम कर रहे हो, तैरना वैरना आता ना? मैंने कहा अब इन्होंने रोल दे दिया है, अब मैं इनको बोलूँगा तैरना नहीं आता, इसी समय कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा शूटिंग कब है? कहते 3 महीने बाद है। मैंने कहा तैरना तो बहुत अच्छा आता है मुझे, मैं तो मतलब कमाल का तैरता हूँ, आपको पता ही नहीं है, मैं तो मतलब ऐसे चल। कहते बस ठीक है फिर तो मैंने कहा जब 3 महीने तक मैं सीख जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर ये नज़दीकी जो होटल है, स्टार होटल या कुछ इधर ही यहाँ पे जूहू में, वहाँ तैरने गया। तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा जो टीचर था, उसने मुझे, उसको लगा कि वो धक्का दे देगा पानी में, मैं खुद ही तैरने लगूंगा। इडियट था वो, उसने मुझे धक्का दिया और मैं डूबने लगा। मैंने उठ के उसको एक थप्पड़, मैंने कहा पागल हो गया। तो मेरे अंदर डर का, इसका पानी का डर आ गया। मैं सीख लूँगा। फिर एक दिन फ़ोन आया कि आपकी शूटिंग है कल। मैंने कहा शूटिंग होगी उसमें सीख लूँगा। कहाँ शूटिंग है? सी रॉक के स्विमिंग पूल में। तो मैं पहुंच गया। तनवीर ने कहा कि ब्रदर वेरी गुड, आई थॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देयर आर 5-6 गर्ल्स इन दिस बिकनी एंड वाटर कैमरा इज ऑन वाटर, सडनली यू कम आउट ऑफ इट इन हाई स्पीड एंड यू सॉर्ट ऑफ, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द विलन। तो मैंने कांपने लगा, मैंने कहा कि तुम मर गया। तो मैंने कहा जब तो इसने मुझे ले लिया है, अब शूटिंग इसकी शुरू होनी है, नाउ ही कांट डू। तो ऐसे तनवीर कैन आई डू दिस इन द शैलो वाटर? ही सेज नो, why will you do it in the shallow water? What are you trying to say? तो मैंने कहा मैं ना तैरना नहीं जानता हूँ। He threw me out of the film, rightfully so. Cut to अमरीश जी को फोन किया, कहते मैं खाली बैठा, मैं आ जाता शूटिंग। I was replaced in that film, and so these are so amazing encounters. You know, I always believe that your failures become your best stories.
फेलियर स्टोरीज आर द बेस्ट स्टोरीज. मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, सॉरी आई एम स्पीकिंग मिस्टर सेठी. मैं यहाँ पर एक प्ले करके आया था. आई एम नॉट, कैन आई टेल यू द स्टोरी? ऐसा मैं, हाँ, एट देयर प्लेस मिस्टर सेठी. तो इनके फादर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, कमला जी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त थी. तो मेरा एक प्ले आना था जो टीवी पे आया था. तो अब मुझे लगा था कि अगर ये प्ले यहाँ पर किसी ने देख लिया, किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने देख लिया, दे विल इमीडिएटली गिव मी द मेन रोल. पर आ नहीं रहा था. तो दूरदर्शन पे वो बोलते थे आज की साप्ताहिक की है कि आने वाले प्रोग्राम्स इस तरह से हैं. तो एक दिन मुझे किसी ने कि फ्राइडे को प्ले है, और तो मैंने यश चोपड़ा जी को फ़ोन किया, महेश भट्ट साहब को फ़ोन किया, एक दो लोगों को और फ़ोन किया. मैंने कहा मेरा प्ले आ रहा है. उस दिन कोई मर गया, कोई राष्ट्रीय नेता, तो वो प्ले कैंसिल हो गया. ऐसे 2 बार कैंसिल हो गया. तीसरी बार जब वो आया तो मैं कि सड़क पे घूम रहा था तो देखा मेरा म्यूजिक आ रहा है. मैंने यश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा यश जी मेरा प्ले आया देखो. तो यश जी नहीं थे. ये फाइनली नेक्स्ट डे मुझे लगा कि पूरा मुंबई मुझे देख के पहचान लेगा. तो मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, कोई नहीं पहचान रहा. फिर मैं बड़ा, मेरे पास 4 रुपये थे. तो मैं, मेरा भाई और एक और हमारा स्ट्रगलिंग रूममेट दीपक सिन्हा, हम गए वहाँ पर खीरा नगर के सामने वो शेट्टी की ढाबा था. तो हमने कहा चलो 4 रुपये में हम तंदूरी रोटी और राजमा खा लेंगे. तो जैसी शेट्टी आया उसने कहा यार तेरा कल नाटक देखा रे, तूने क्या एक्टिंग किया है, अरे आओ बैठो बैठो. तो मैं थोड़ा चौड़ा हो गया. तो कहते क्या कमाल क्या किया, तुम्हारा जैसे काम आएगा तुम तो इमीडिएटली बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो. तुमने क्या खाया, क्या खाएगा, तुम क्या खाएगा आज बताओ. मैंने कहा 2 बियर ला दो तंदूरी चिकन ला दो, राजमा ला दो, पुलाव ला दो. अरे तुम खाओ, जो मत लाओ जो बोल रहा है. तुम क्या काम किया, क्या काम किया. फाइनली बिल आया 188 रुपये. तो मैंने कहा अब तो ये मेरा फैन है, ही थिंक्स आई एम द फ्यूचर डायरेक्ट एक्टर. तो मैंने कहा ओह शेट्टी साहब, वो मेरा बस सडनली बिकेम एन इम्पर्सनल पर्सन. सडनली ही सेड देखो भाई तारीफ अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है. तो एक काम करो, ये पैसे लेकर आओ, घर जाओ, तुम्हारा पर्स रह गया ना. आई वेंट टू हिज हाउस एंड आई टुक 200 rupees फ्रॉम हिज फादर and that's how I got bailed out. So these are such amazing special encounters, incidents. And do you think we should ask the audience to ask questions, because we have run out of, unless you want to say any strange encounter of yours, Deepti? Yes, there are lots in her book. I have read your book. And I love the title of your book, A Country Called Childhood. Yeah, thank you. Unbelievable title. thank you. Unbelievable. It's today only, you know, I must share with you, today only I have put an interesting quote in one of my, I have put this childhood picture of mine. When I was 16, I have written इसमें, इतनी चाहत तो करोड़ों रुपया पाने की कोई भी नहीं होती जितनी बचपन की तस्वीर देखकर वापस बचपन में जाने की होती है. Lovely. Yes. So tell us something about your strange and मतलब इस तरह की कुछ नहीं, मतलब बहुत स्ट्रेंज जिसको कहा जाए. अब इनके जैसी स्ट्रेंज तो कोई कहानी नहीं हो सकती है. मतलब आपकी जैसे भी वो शिमला के भूतों वाली और हाँ. पहाड़ों में और उनके भी नहीं, नॉट समथिंग लाइक दैट. बट या आई हैव I've had an experience with the supernatural for sure, and not बचपन में या पहाड़ों में या वहाँ नहीं. Very much here in Bombay, and also in New York where I was studying and where I grew up partially. But I've felt the presence, you know, और बहुत ज़्यादा affirmative में वो cross check भी हुआ और वो पता भी चला कि ये कोई presence होगी तभी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो सकती है, otherwise नहीं हो सकती. तो इस तरह का थोड़ा बहुत, you know, but no, I can't think of anything that can be as entertaining as your qissas. So anybody from the audience, if they want to ask any question, that okay, lovely. Take this. You've talked about your strange encounters, and you've all been prolific actors and, you know, writers now. And honestly, it takes a lot of observation to observe when you're acting. And I think it goes a step further when you're also writing.
And to live through these strange encounters, we all have to be observant. Otherwise, we miss out on. So my simple question is to all three of you: how do you have that slowness in life to actually stop and reflect on the strange encounters which you actually reflected after so many years, which is unbelievable. I mean, the book you have written, sir, you have written, ma'am, about your childhood. It's eons ago thing you've written about now. So how do we stop and observe? Yeah. So I just want to know, how do you slow down and observe things to maybe remember them or about life? So I think let Parikshit ji, he is asking कि आप कैसे? As far as I am concerned, this was written over many years. I mean, I wrote it and kept it chapter-wise separately. I thought it never be published. Thank God, Mohit, I sent a copy to Mohit and to Tanuf, and they said, no, you will make it into a book. Otherwise, these things happened over many, many years. I think the best thing about life is that you get publishers like you for people like us. I think all credit goes to my publisher, Ashok Chopra and Hay House. I used to narrate, he's from Shimla and he's from Chandigarh. So he one day told me, "Tu itni kahaniyan sunata, why don't you write a book?" I said, मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल का हूँ, मेरे से एक सेंटेंस नहीं ठीक तरह से बोला जाता. कहते नहीं, just record it and send it to us. And that's how my first book came, which was the best thing about You Is You. Because I can't sit down and write. I can't sit down, then one fine morning this happened. It's not. It's just the thoughts. And I can only write about my life, what I've learned from. As far as observation is concerned, strangely, all three of us are writing about books that we have, about life that we have lived. Her book is about Amritsar. His book is about his encounters over there, and my autobiography or my book on Corona, Your Best Days Today, is about observation. Comes thanks to my small town upbringing. Small town में बहुत time होता है observe करने का, दिन खत्म ही नहीं होता है. सबके पास टाइम होता है, सुनने वालों के पास टाइम है, बोलने वालों के पास टाइम है, धूप सेक रहे हैं, वो बालों में कंघी कर रहे हैं माता बच्चों के, कुछ भी, कितना टाइम होता है. स्कूल चलते चलते हर जगह शिमला में चल के जाना होता है. मतलब शिमला में अगर उस समय, अब तो नहीं, उस समय अगर कोई आसमान को देखता था तो 5-6 लोग और खड़े हो जाते थे आसमान को देखते हुए. तो अपना अपना आसमान ढूंढ रहे होते थे. तो क्या देख रहे, कुछ नहीं, वो देख रहा तो मैं भी देखने लग गया. तो आई थिंक एंड माई फैमिली मेम्बर्स वर वेरी कॉमिकल. We were 14 people living in a small room. So इतने सारे, all the fantasy stories were in my uncles. Lots of my characters that are on screen are from my uncles. मेरे एक अंकल थे जो 7वीं क्लास में 8 बार फेल हुए थे. तो 8वीं बार उनको कंपैशनेट ग्राउंड में 9वीं क्लास में प्रमोट कर दिया था. बिकॉज क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे. वो बैठे बैठे दाढ़ी आ गई उनकी वहीं पर बैठे. Also, I think when you are very poor, you look at life with a sense of humor, because that's the only way to deal with it. Because you look at life, and everything appears to me funny, everything. So I think that's where observation starts. And apart from that, actor's job is to sort of. अब ऐसा नहीं कि मैं बैठ के देखता हूँ कि आप कैसे बोल रहे हो, but I think I'm interested in life. I'm interested. Can I say something here about you, of your book? The one thing about him, which makes him such a great man, I really admire him, is his empathy. When I read his book, I got this impression, firstly, that he's an absolute optimist. He looks at the positive side of things. And the other thing is empathy. I think one of the reasons why you write so well is because he genuinely is a man who feels for his fellow men. For other people, especially the people who are not so well off. And that is what I admired in your book, and it was fantastic. It was fantastic. Empathy. Thank you. I must share that Malvika is here, and she was the first person to ever write about me when I had started writing doing acting in my films, etc. She met me at Kiran's place. She was Kiran's best friend.
And she just now also mentioned that it was our anniversary. And she wrote, and that's how I said that tape recorder and pause button, because our relationship will always be there. It's so strange that my friends from New York are here. I think it's people who make your life richer. Not places, not money, not anything. It's people who make it richer. So empathy, I think, is the most important. When I was doing Saransh, just first day of the shooting, so I asked Mr. Bhatt, I said, now we are about to shoot. We are about to put our first, I'm about to give my first shot. Tell me one word which sort of dominates this character. One word. He said compassion. That he understands. I think that stayed with me for the rest of my life, for all these years. Whenever I see somebody, I first feel compassionate towards the person. किरण मुझे बहुत बोलती है, तेरे को कोई बुरा ही नहीं लगता है. और मुझे नहीं, मतलब सच बात है, मुझे हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, मुझे लगता है. Anyway. That's what I've noticed about all great actors, by the way. Brother Amitabh has that. My father had that. And this is the one quality that makes a great actor, I think, empathy and compassion. Balraj Sahni Saab, by the way, was the first realistic actor ever in the country. Was he? First realistic actor. First, when dramatic being acting was larger than life, he was like a classroom book to watch Balraj Sahni Saab act such effortlessly, amazingly performed. So I thought